Give it up for Samyak. यार मतलब इतने टाइम से टॉक्स दे रहा हूँ बट स्टेज पे आके मैं भी नर्वस हो जाता हूँ. सो स्टिल लर्निंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. बट माय नेम इज सम्यक एंड मैं चश्मा उतार के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ. तो या मेरा नाम सम्यक है. इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे बारे में अगर बताऊँ तो 2019 में मैंने फ्लटर सीखना स्टार्ट किया था. देन आई वाज इन कॉलेज एंड 2020 में कोविड आ गया. तो कोविड पे हम सब घर पे आ गए. तो मैं फ्लटर सीखता रहा एंड जब कोविड खत्म हुआ और कॉलेज वापस जाना था तो मैं गया ही नहीं. और फिर आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्लटर डेवलपर. सो या कायदे से लाइक आई एम 12th पास एंड आई लाइक बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दैट्स माय शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे हम सब फ्लटर डेवलपर्स हैं एंड फ्लटर इज ऑल अबाउट विजेट्स. तो यहाँ पे कौन ऐसे जिन्होंने फ्लटर में बहुत सारे यूआईज बनाए हुए हैं, बहुत सारी यूआई स्क्रीन्स. कोई भी एक ऐसा है जिसने फ्लटर में काम करता है बट यूआई नहीं बनाया आज तक, जो सिर्फ प्लगइन्स वगैरह पे काम कर रहा है? ऐसा कोई नहीं है. तो यार आप बढ़ाओगे आगे उसको? नहीं, उसको वापस कर देते हैं. तो कोई भी अपने फ्लटर ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या मांगते हैं हमारे प्रोडक्ट मैनेजर या टीम लीड से? फिग्मा के डिजाइन्स. दैट इज हाउ एवरीथिंग वर्क. सबसे पहले आता है फिग्मा. फिर वी स्टार्ट लाइक राइटिंग इट टू कोड एंड वी लव बिल्डिंग विजेट्स एज फ्लटर डेवलपर्स. बट बहुत बार ऐसा होता है कि यूजर्स हमारे रिलीजेस का वेट कर रहे हैं बट हम फिग्मा टू कोड में हफ्ते लगा रहे हैं एंड दैट इज थोड़ा सा अनफेयर फॉर यूजर्स. सो दैट नाउ दैट एआई इज हियर, हाउ कैन वी यूज एआई टू गेट आवर कोड फास्टर इनटू द हैंड्स ऑफ यूजर्स? सो इसका मैंने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि एआई को यूज करके हम फ्लटर के यूआईज कैसे बना सकते हैं. सो आई यूज्ड अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, जेमिनी, क्लॉड, एवरीथिंग. एंड जब भी मैं उनको कुछ बोलता था कि एज सिंपल एज जनरेट अ लॉगिन स्क्रीन यूआई फॉर फ्लटर ऐप, सो इट विल जनरेट समथिंग लाइक दिस. इट इज थोड़ा सा अनक्लियर बट दिस इज अ गुड लॉगिन स्क्रीन यूआई. ईमेल है, पासवर्ड है, फॉरवर्ड पासवर्ड है, सब कुछ है. बट MVP वाइज इट इज वेरी गुड. बट इफ यू लुक एट इट यू विल नोटिस दैट देयर आर सम डिजाइन कंसिस्टेंसीज कि लॉगिन बटन थोड़ा सा वियर्ड है, पैडिंग अच्छे से नहीं है, प्लस डिजाइन अनपॉलिश्ड है. प्लस जैसे जैसे आप अगर एआई को यूज कर रहे हो टू बिल्ड अ लॉट ऑफ यूआईज, यू विल नोटिस कि एक स्क्रीन को एक डिजाइन थीम से बना देता है, दूसरी स्क्रीन बिल्कुल ही दूसरे डिजाइन थीम से बनाएगा और आपका ऐप एंड में वियर्ड लगेगा. So I started thinking, can we build a solution that can help developers create beautiful looking UIs that is consistent across all screens using AI. So that's where we started building a new tool called Pixel. Pixel का purpose है to help you all build production ready UIs in Flutter, and it gives you very high quality code that you can use in your applications directly. Plus Pixel भी हमने Flutter में ही बनाया है. So we are dog coding it every time. So now I'll show a very small demo कि Pixel आपको UIs बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है live. So live demos are always risky. The first risk is कि मेरी screen share होगी कि नहीं. Let's wait for that. Oh, Sunny got his magic done. दिख रहा है क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? Are you guys able to read? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? क्या मैसेज बॉक्स में लिखा है? बता दो दें so I can confirm. What would you like to be? What would you like to build? बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं उधर कंसर्ट हर जगह ये लिखा होता है what would you like to build. Yeah. तो let's just try very simple. जो prompt हमने पहले एक normal LLM को दिया था, let's give the same prompt to Pixel. So I'll say generate a login screen. Flutter specify करने की जरूरत नहीं है. Yeah. So we gave the same prompt to Pixel, and you will see that it will. I created this very beautiful like loading animation. So it will first analyzing our design requirements कि हमें क्या बनाना है. Based on the designs, ये पढ़ पा रहे हो क्या आप लोग? Nice. Fetching required components, great. So based on the design, it will first fetch all the relevant components जो इसको इस design के लिए चाहिए. जैसे कि हमारा all field हो गया. And a lot of other things, and it will start editing the files and it will add the code for it.
सो इसने खुद फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करा एंड इसको खुद ऑटोमेटिकली एडिट कर रहा है इन माई लैपटॉप एंड देन इट विल टेस्ट कि सारा कोड प्रॉपरली जनरेट हो गया एंड वंस दैट इज डन इट विल स्टार्ट ओपनिंग अप अ प्रीव्यू ऑफ दैट यूआई इन माई क्रोम ब्राउजर ऑन माई डिवाइस. सो अभी ऐप बैकग्राउंड में कंपाइल हो रहा है and there we go. It generated a very simple looking but yet classy login screen का UI. So now when I see it, I notice कि यहाँ पे Google और Apple के buttons नहीं है and आजकल email password से कौन ही sign in करता है. तो let's add Google and password के buttons to Google and Apple के buttons to this. So what I'll do is I'll just go to the chart again and I'll say add social auth buttons Google and Apple. Cool. So it will start analyzing कि अभी हमारा डिजाइन कैसे दिख रहा है एंड इसमें गूगल एंड एप्पल के बटन्स ऐड करने के लिए कौन कौन से इसको कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे एंड इट विल स्टार्ट एडिंग दोस कंपोनेंट्स. सो इसने एक नई फाइल ऐड करी है सोशल ऑथ बटन्स करके विच आई थिंक कंटेन्स द सोशल ऑथेंटिकेशन बटन्स. इट विल वैलिडेट एवरीथिंग अगेन एंड वंस इट्स रेडी इट विल अपडेट द यूआई एंड वॉइला you have the social auth buttons there as well. And so we got a basic looking login screen. This quite thing हम production में भी use कर सकते हैं. If you want to take a look at the code of this, you can just tap on this file. You have the whole Flutter project created right here. आप इसको VS Code में open कर सकते हो and you will see the entire code generated. It has created all the themes properly, the screens, and the individual components from text fields to the text buttons and everything else. Now you can just copy it to your actual application or you could edit it further. Now let's take it a step ahead and do something more advanced. So a friend of mine wanted to build a travel booking app like this. तो जब भी हमें कोई भी ट्रैवल बुकिंग का ऐप या कुछ भी बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रिबल पे जाके we start looking for some good UI things. So I went to Dribble and I find this nice looking UI which I would like to use for my travel booking app. So what I'll do is I'll just attach this file, give it to Pixel and I'll say generate this travel booking app. Now it will get started, it will analyze the screenshot that we have given it to it and it will go on to repeat the same process and within a few seconds you will see the UI created. Now this is a part that I'm nervous about. I hope this goes well. By the way, just to reiterate, this whole IDE that we have created Pixel, this is also created in Flutter. तो जितना भी AI का कोड है ये सब मैंने Dart के अंदर लिखा है and it is all running locally. And if any of you is looking to build AI apps in Flutter, either you can use the Firebase AI जो नया launch हुआ है that package. यहाँ पे मैंने Google Gemini का specific package है जिसमें आप API key के थ्रू use कर सकते हो without using Firebase. So I have used that one to build this project. So now I think the app is ready. All the files have been written and we should shortly see the UI open up. So there we go. क्रिएट कर दिया क्या उसने वैसा? Yeah, pretty much it. I think ये बटन थोड़ा सा बेटर हो सकता था, but we'll get there. We'll improve that. One last thing that I think we should go ahead and to make it a working application. इसकी जब आप किसी लिस्टिंग पे क्लिक करो, you should be able to book that hotel as well. So इसके लिए मैं जब ड्रिबल पे इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था तो कुछ अच्छा मिला नहीं. तो मैंने क्या किया, एक सिग्मा से एक वायर फ्रेम उठा लिया. सो एक बेसिक लुकिंग मॉकअप ऑफ अ होटल बुकिंग पेज. सो सिंस पिक्सल इज इंटेलिजेंट एनफ टू हैव द डिजाइन सेंस फॉर मी, आई डोंट नीड टू गिव इट गुड डिजाइंस, आई जस्ट नीड टू गिव इट मॉकअप्स एंड आई विल से व्हेन यू क्लिक ऑन अ होटल open this booking page.
So yeah, now it will understand the requirements again, and it should build a flow. जहाँ पे जब we click on this, we should be taken to a hotel booking page. By the way, this preview package that you see, it's an open source package that you guys can also use it for your apps. It's called Pixel Preview, and this is something we have also built internally, but it's completely available on pub.dev. So you can use this package as well if you would like to preview your apps. So yeah, now it will add a new screen called property detail screen. And it saw that there are some errors, analyze the errors, and it will try to automatically fix them. So it's completely hands off for you. जो भी error आएगा, it will try to automatically fix it on its own. And once it's fixed, successfully fixed all the errors, it will start refreshing the UI. So when we tap on this, we will be taken to a bookings page screen, which also looks pretty decent, except this thoda sa app burger problem. But yeah, we got a booking page also working for you. So this is the demo of Pixel. You can take wireframes, mockups, dribbles, inspirations, and anything, and you can create a full flow of an application. Pixel is, अगर आप लोग So I think I'll need to share the slides back. By the way, कैसा लगा demo? Like honest feedback. This is something I'm still working on, and anything that you guys want to say about this. ऐसे कोई और tools use करे आपने to build UIs? Like what are UIs using right now? Are you using Bolt DMS with artificial? Bolt? Bolt DMS? Bolt.new? Bolt.dms. The open source package. Okay. Lots of people do this kind of work. Okay. So it has produced the prompt engineering architect as the response from AI. Nice. I'll check that out definitely. I thought you have made it on top of that. No, not really. Like I didn't know about this. But yeah. Okay, cool. So like right now the UI that I showed you guys was a very modern looking UI, जो minimalistic and modern looking UI that we see in apps like PhonePe and Google Pay. But there are a lot of other design themes that you may want to build your apps with. For example, Cred has this very futuristic kind of UI that I think we all love. And similarly, you might also want to build your apps in a slightly different way. अगर आप कोई professional app बना रहे हो, you want to build it in a more LinkedIn-like format, and if you want to build something playful, you want to build it in an Airbnb-like format. So the way that we are thinking about this, we will support any kind of design theme that you want to choose. You just come, pick the design theme, be modern, playful, or anything that you want to choose, and just start building on it. So we are going to start giving first access of Pixel now. मैंने कल ही development finally खत्म करा है, and it is ready to be shared to you guys. So if anyone of you is interested to try it out, just scan this QR code. Let me know your email or WhatsApp number if you can share that, and I'll ping you with the link to give you access to Pixel. So take your time, scan the UI, and meanwhile, happy to take any questions if you have time left. Poonam. Do we have time left? Okay. Sorry? Scan नहीं हो रहा?